Hello, Bachu. Let's read the question. And the question is, during the course of millions of years of their existence, most species should have evolved a relatively dash internal environment within the body of organisms. The internal environment would permit all biochemical reactions and physiological functions to proceed with dash efficiency and therefore increase the overall fitness of the species in terms of C. So यहाँ पे हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन फॉर ए बी एंड सी. ऑप्शन ए में ए इज कांस्टेंट, बी इज मिनिमल, सी इज थर्मोरेगुलेशन. ऑप्शन बी में ए इज कांस्टेंट, बी इज मैक्सिमल, सी इज होम्योस्टेसिस. ऑप्शन सी में ए इज वेरिएबल, बी इज मिनिमल, सी इज ऑस्मोरेगुलेशन. एंड ऑप्शन डी में ए इज कांस्टेंट, बी इज वर्सेटाइल, सी इज होम्योस्टेसिस. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर निकालने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें जरूरत है दैट इज अबाउट होम्योस्टेसिस. व्हाट इज दिस प्रोसेस ऑल अबाउट, ये हमें जानना है. तो यहाँ पे होम्योस्टेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल environment, and this internal environment is with respect to temperature as well as the pH. So यहाँ पे basically क्या होता है, when it maintains a constant temperature, इसके वजह से this is carried out by warm blooded animals. And because of this, if we see, all biochemical and physiological reactions can occur effectively. ठीक है? And this increases the, if we say, overall fitness of the species. Overall fitness of species. So ये सारा कुछ होम्योस्टेसिस के वजह से ही होता है. So यहाँ पे अगर हम फिर से पैराग्राफ पढ़े, during the course of millions of years of their existence, most species should have evolved a relatively constant. So यहाँ पे A हो जाएगा constant. B क्या होगा? B will be, this internal environment would permit all biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximal efficiency. So B will be maximal. And finally this is concerned with the last tha, that is homeostasis. So the combination should be constant, maximal, homeostasis. So ये हो जाएगा हमारा option B में. So we can write that for this particular question, option B is the correct answer. I hope you have understood it well. Thank you and best of luck.